मेडिकल और एजुकेशन के चक्कर से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं ना, क्योंकि अब कोई बीमार हो गया यहाँ, सीरियस बीमार होते हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है, समझो वो मर ही जाएगा। यहाँ खाली कंपाउंडर रहता, डॉक्टर भी नहीं रहता यहाँ। बहुत दिक्कत होता है कि रात को बीमार हुआ तो। दिक्कतें तो बहुत आती है पहले, क्योंकि स्वास्थ्य यहाँ पे दूर दराज एरिया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कम 75-80 किलोमीटर दूर है, और पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर भी रहते नहीं है। अब यहाँ से उत्तरकाशी तो अमीर जाए, गरीब तो जा भी नहीं पाएगा। कभी बहुत इमरजेंसी होगा, अभी तो रोड ब्लॉक होगा तो कैसे जाएगा। अचानक से कोई इमरजेंसी हो जाए तो दिक्कतें बहुत आती है, फिर यहाँ से रातों रात गाड़ी करके उत्तरकाशी ले जाना पड़ता है। उत्तरकाशी से हमको कहीं ज़्यादा हुआ तो फिर नीचे जाना पड़ता है देहरादून की तरफ। ये सब स्वास्थ गांव है, हम इधर तकनौर में। तब तो बहुत बढ़िया, अच्छा अस्पताल खुला तो बढ़िया है। पैथोलॉजी में जो टेस्ट हैं, अगर वो जब तक क्लियरिफाई नहीं है या उनका ढंग से आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए डॉक्टर, तो उस हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे माना ऊपर से, जैसे जखारी गांव है, यहाँ सड़क नहीं है, 5-7 किलोमीटर ऊपर है, तो जो पेशेंट आ गए, माना यहाँ कोई पेट दर्द का है, कोई कैसा है, तो यहाँ पर बेसिक की जांच होती है, जैसे हीमोग्लोबिन है, HIV है, जैसे जो एकदम तुरंत किया और हो गया। तो बड़ी बड़ी जांचें यहाँ पर नहीं होती थी आज तक। So the problem we realize or we observe that despite of in India we have best of doctors, best of technologies available here in India, but still the access to the basic healthcare is still not available to the majority of Indians. And if you see the rural part, you don't have any there is a problem with the infrastructure. There is a shortage of manpower or trained doctors. We have seen places like where you don't even have a basic the healthcare facilities. After the observation and after the discussion with the technical team and the clinical team, we decided to come up with such solution which can be transported from one place to another place very easily, which can be installed very easily, and which can be operated also very easily with the lowest manpower or lowest any clinical requirements or lowest capital expenditure also. You can actually port it from one place to another and install it very quickly and provide that easy access for basic healthcare, which is a missing link across India. They are actually starving to get some kind of facilities where they can actually communicate with the doctor or they can get the early diagnosis. When we are talking about universal healthcare coverage, diagnostic gap remains the biggest setback in primary healthcare. If we are able to narrow this diagnostic gap in common conditions like type 2 diabetes mellitus, high blood pressure, tuberculosis and malaria, we'll be able to prevent millions of premature deaths every year. So on this platform, we can cover almost 80 to 90% of the commonly screened tests which doctors need for timely diagnosis and treatment.
Currently in Swayam, we have integrated more than 80 test parameters, including invasive and non-invasive. In invasive tests, we have cardiac markers, hormone markers, blood-borne disease, respiratory disease, metabolic disease, and vector-borne disease. We also have telemedicine platform through which patient can do video consultations with doctor anytime, anywhere. इस मशीन से मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा लोगों को, पब्लिक को, जनता को। जो गरीब जनता आती है दूर दूर से, बहुत दूर से जो माना जनता आई और उसको माना यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा तो उसको बढ़िया लगेगा। लोगों को देर दूर नहीं जाना पड़ेगा, खर्चा वर्चा बचेगा। फिर ऐसा देखो, ऐसा आजकल बरसात है, बरसात आप जानते कितना रोड ब्लॉक होता है, पत्थरें गिरता है सड़कों के ऊपर से। तो जब यहीं हो जाएगा तो लोग क्यों जाएगा, है ना। वो जो आपका जो स्कीम अगर आप यहाँ वो लगाना चाहते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। किसी को हाल बुखार भी हो जाता है, लोग रात को भी डर लगे ना, डर से लगेगा। गांव में ये मशीन आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक तो पेशेंट का समय बचेगा और इलाज भी टाइम से हो जाएगा। इमरजेंसी केस में तो बहुत ज़रूरी है ये कि मतलब जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ, अब ये जांच का रिपोर्ट है, हम लोग इसको ले जाके कहीं दवाई खा सकता है। तो गरीब जनता के लिए जो स्वयं आप लेकर आए हैं ये बहुत ही कारगर साबित होगा मेरे हिसाब से। पहाड़ों में दिक्कतें ऐसी चलती ही रहती हैं, तो अगर इस तरीके की मशीन अगर हर छोटे सेटअप पे हो और छोटे ब्लॉक्स में हो, इस तरीके की हो, तो बेसिक टेस्ट या बहुत सारी चीज़ें जो है हम स्वस्थ भारत की तरफ जो है बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। The data which is generated from these villages can actually help district collector or chief medical officer to take the right actions, not only in situations like this COVID pandemic, but on a regular basis. That's how it can help the citizens as well as the government. And we are trying to bridge that gap and create a sustainable, affordable solution which will be a win-win situation for all of us.